I'm currently serving as a deputy manager in State Bank of India, Jaipur. Give me the historical significance of your district. Any significance in relation to the art and culture? Aditya, let's assume कि you are part of the panel और आप इंटरव्यू ले रहे हो जेकेएस एस्पिरेंट्स का और True. जैसे ही दरवाजा खुलता है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी रूम में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए विल यू सिलेक्ट हिम प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ नाउ My name is Aditya Krishna Dogra. I hail from village Hiranagar, district Katua. I have done my schooling from Mothers International School, Delhi. After that, I completed my BTech in Electrical and Electronics Engineering from Guru Gobind Singh, Indraprasth, Delhi. I'm currently serving as a deputy manager in State Bank of India, Jaipur. And my hobbies are to listen to music and watch informative web series. that you're from your schooling has been done in Delhi. Can you give me a brief account of what improvements has the government of Delhi done in the schooling because it's become a model for the entire nation now. So basically, the Delhi government has focused in enrolling more teachers to improve the teacher-pupil ratio in the schools of Delhi, and have also done great strides in improvement of ICT, like use of information and communication technology for teaching to in schools. How have they done it? How have they increased the student enrollment ratio? Sir, they have focused on better quality of education, and there's a regular PTA meeting in which they give outreach to the parents so that they enroll more and more students in government What schools. was the contribution and the study done by Abhijit Banerjee regarding the student enrollment ratio, and what is the concept known as? Sir, I'm not sure about this concept, sir. Oh, we know that he was given a Nobel Prize in economics. Nobel Prize. Yes, Are sir. you I'm aware aware of the? Yeah, what was the concept he was given the Nobel Prize for? He quantified the theory behind. I'm not very sure, but if you give me a chance, I would like to try. Yeah, sure. He proposed a theory on poverty. To gauge poverty. He with Esther Duflo. But what's the exact concept? I'm not really sure right now. He used the randomized control trials (RCT). That is actually a thing done in the medicine. He used that in poverty as well as increasing the student ratio in the schools. All right. We have also this National Capital Territory of Delhi Amendment Act of 2021. Are you aware of the act? Yes, sir. I'm aware of the act, but yeah, sir, I'm aware of the act. Yeah. What are the key provisions of that act? So basically, the act gives more power to the lieutenant governor in the day-to-day activities of the uh, government of NCT of Delhi. It gives the final say to the lieutenant governor that the important all the important decisions will go through after the decision of the lieutenant governor. So how do you look at it? How do you look that the increasing centralizing tendency now in the Indian politics? Sir, it has its merits and demerits both because since the seat of the Indian Parliament is in Delhi, so I feel it's necessary to have a few powers with the central government so that the machinery runs smoothly. What would be the demerits? The demerits will be that the voice of the people won't be heard because the lawfully elected representatives won't have that much say in the final decisions which have to be taken. Because after all, they are accountable to the people. They have to fight elections every 5 years.
Your district is Katua, Kathua. sir. Okay. Give me the historical significance of your district. Any significance in relation to the art and culture? So the Basholi paintings are famous from the Katua district. Mhm. It was introduced by Raja Bhupat Pal in the 16th It is century. it is related to which school of paintings? The Pahadi school of painting, sir. Any famous personalities from your district that you can remember? Sir, so from my village, Shri Girdhari Lal Dogra ji was the ex-finance minister. He presented a record number, the budget for a record number of times, 26 times, sir, to be precise. And Thakur Baldev Singh ji, he was a member of the Jan Sangh. He also hailed from my district, sir. Okay, regarding the presentation of the budget in the parliament, uh, is the word budget mentioned anywhere in the constitution? No, sir. The term budget is nowhere mentioned in the constitution. It's rather mentioned as the annual financial statement, sir. Under which article? Sir, not sure, sir, right now. But Okay. could I make a guess, sir, if you allow? Yeah, sure. Yeah, please. Is it, sir, Article 112? Hmm. It is Article 112. Can you tell me what are the six stages that the budget has to pass through before it is implemented? All the six stages, sir. Do you want me Yeah. to? Yes. Yes. Uh, Sir, initially, it goes through the same process, and an ordinary bill has to pass through, but it has two additional phases, like the passing of the that finance bill and the pass. The last two stages are passing the finance bill and the passing of the money bill. The first four stages include, sir, the presentation of the budget initially, then then the house goes into a recess, the departmental committee study the bill. Then a detailed discussion takes place on the bill in stage two. In the third stage, sir, they pass the bill with its provisions in entirety. Which Uh, bill is which bill is passed first? Is it the appropriation bill or the finance bill? the appropriation bill is first passed, and then the finance bill is passed. Appropriation bill is related to what? Is it related to the revenue or expenditure of the government? It's related to, sir, the expenditure of the government, because the government has to run its finances, so it needs to appropriate money Okay. lawfully. Recently, the chief economic advisor of India has mentioned that we should not call it budget. We should call it bahi khata. So, how do you look at that? Should we end this colonial practice? Sir, I haven't heard of the his statement per se, uh, but sir, if I have to comment on the budget practice, sir, I would say that we can have a few changes in the budgeting system. That rather than having a small interval of 1 year, we can have a targets like 3 year targets, so that because most of the schemes take years to for completion. So if every year we allocate some funds to a procedure to a plan, and if it doesn't come through, then it's a waste of the money of the exchequer. So I think that it should be a little more long term in perspective. But But the budget, the schemes that we launch are long term in perspective because we don't end the scheme when the budget ends. They are in continuous in perpetuity. Let's take an example of Manrega. It is still continuing, or the midday meal scheme for that matter. So sir. we don't stop the schemes when the budget ends. So so But sir, so the there have concept. been, sir, Yeah, yeah, sir, please sir, kindly continue. continue, sir, kindly continue, please. So these questions, these topics, these schemes, they keep on they are in continuity, in perpetuity. So which is the concept that is related to the budgeting, which stops a particular scheme uh, the day the budget ends.
the day the budget ends. Uh, sir, the funds lapse, sir. It's called, sir, March rush. Uh, I think, sir, I couldn't get the question. Are you aware of this sunset budgeting or zero-based budgeting? Sir, could you repeat, please? Are you aware of this zero-based budgeting? Yes, sir. I'm aware of the zero-based budgeting, sir. How is zero-based budgeting different from sunset budgeting? Sir, in zero-based budgeting, sir, we start from the scratch. That, sir, we don't have uh, any prior. We don't allocate per se that so much money has to be allocated for a scheme. As in when the requirement comes, we reallocate money to a particular program. But in sunset budgeting, sir, once the time period is over, the money lapses. All right. I can see that your mother tongue is Hindi. Is that right? Yes, sir. Can you tell me which are the countries that have recently given a minority status to Hindi language? Sir, I think Fiji is one of those countries. On which day the World Hindi Day is celebrated? Sir, I'm not aware, sir. Your name is Aditya. So, What is the meaning of this name? sir, it means sun god. It's a big sun god, sir, in the Hindu mythology. Yes, sir. Aditya L1 mission is there. When will it be launched? Sir, I'm not aware, sir. Okay. What is the mission? What is it going to study exactly? Sir, it is going to study the the sun in particular by placing satellites at the Lagrangian point, sir. And what is the Lagrangian point? Sir, it are the Lagrangian points are certain points in the space where the forces which are acting on it balance out, sir. So that the satellites can stay there continuously. They won't face any other force. If you have two bodies of mass, two heavenly bodies, how many Lagrangian points do we have? Sir, I'm not sure. And which would be the rocket that would be used to launch Aditya L1? Sir, could I guess, sir? Not very sure about it, but Please. is it GSLV Mark II, sir? No, It is GSLV Mark III. Okay, what is the difference between the Mark II and a Mark III? sir, the speed at which it travels and the load which it can take, sir. What is the exact difference in technology? Sir, I'm not sure. I can see that you mentioned in your introduction that you're a deputy manager in SBI, State Bank of India. State Bank of India was formerly known as. Sir, Imperial Bank of India. How was that created? It was created by merging the banks of Madras, Calcutta, and Bombay Presidency. In which year? Sir, sir, I'm not very sure, but I think, sir, 1826. It was 1921. Tell me, how is the public sector bank? How are public sector banks fighting the issue of NPAs? Sir, so the government is helping the public sector banks
banks with infusion of fresh capital, and we are trying to clear our bad debts books through selling our bad loans to recovery to debt recover. One is like this, sir. One is the SEZ Act, the securitization of financial securities, through which we send cases to the debt recovery tribunals, from where we try to negotiate the settlement. And the other way is to selling our bad NPS to bad banks, which buy the NPAs at a discount, and then they recover it eventually. So our So, balance sheet gets cleared. okay, according to you, what is the total corpus money that is actually stuck in NPAs in India? Sir, I don't know, sir. What are the problems with these asset reconstruction companies? What are the issues involved? Sir, so the thing is that they don't have any specific guidelines to follow while they have for recovery, and the expertise is also lacking, which required. You mentioned that the government is helping the banks through the induction of fresh capital. Can you name a scheme that the government had launched regarding that thing? Regarding infusion of capital, Yes, yes. sir, I don't remember. Can you name the scheme that RBI recently had launched for the securitization of these loans? So, I Okay. can recollect. Okay. What is haircut? Haircut means uh, to sell one of your assets at a discount. Okay. Now tell me, we recently in 2016 created this code, the Insolvency and Bankruptcy Code. What is So, insolvency and how is it different from bankruptcy? What is the difference between the two? sir, while insolvency concerns individuals, bankruptcy has to do with companies and corporate institutions. So an individual cannot be a bankrupt. Is that what you're saying? No, sir, an individual can be bankrupt, but I think the terms used are different. Okay, tell me, what is the problem with this monetary transmission in which the RBI is coming up with a monetary policy? They're fixing the repo rate, but the monetary policy is not transmitting. What do you think about this issue? Why is there this blockade of the monetary transmission? Sir, when it comes to the public sector banks, they have less appetite. The public sector banks are overrun with uh, they are overrun um, with the implementation of schemes of the government, and So implementation of the government schemes, is that the reason why monetary policy is not transmitting? the NPAs is one of the biggest reasons, because the cost of capital is very expensive when it comes to banks. Okay, what has RBI Even done to achieve monetary transmission? yeah, RBI has changed the write-off base rate which used to exist, and now uh, our lending is based on repo rate. And what do we call it? Is it an internal benchmark system or an external benchmark system? Sir, it's an external benchmark system. It's called the MCLR, sir. Marginal cost of lending rate, But MCLR. MCLR is an internal benchmark system. It was dependent on the operational cost of the bank, and it also included the repo But rate, but it was not entirely dependent on repo rate.
Sir, it's not entirely dependent on the repo rate, but repo rate also forms an important part of the MCLR. But MCLR, we also have this one more cost known as the CRR cost. Why is CRR a cost for the bank? Because, sir, with maintaining that CR, we don't get any interest. Has It's RBI it's the provided cash. any interest on CRR until now? No, sir, the RBI hasn't provided any interest rate on CRR. Banks also maintain this another ratio known as SLR. In which form is the SLR maintained? Sir, SLR implies the statutory liquidity rate ratio, and it includes uh, uh, the secured assets like gold, the government securities, and cash, sir. So a bank maintains the entire SLR in which of these three options? No, sir, it's a mix of all the three, sir. It can be any one of the three in a combination. Okay, tell me about this. Recently, RBI has done, it was charging a commission on whenever the online banking system or online banking transactions were done. But recently, RBI has given up its commission. Why is the commission rates continuously on these online transactions being lowered and even being abolished altogether? Sir, there are many advantages of getting our economy online. One is to make the transactions uh, transparent, and to make it a part of the system, and to root out corruption as well, because money transactions can't be can't be monitored that effectively as compared to the online transactions. Moreover, you don't have to print any money or currency when the transactions happen online. So the RBI is coming up with a digital rupee. The same way China is coming up with its digital currency, so that the transaction cost lowers. Digital rupee will work on which of the systems, which of the technology systems? So the blockchain technology. Tell me, your bank SBI, along with nine other banks, they've created this NPO by the name of NPCI, National Payments Corporation of India. And NPCI is a major player in the digital payment ecosystem in India. So, what is RBI doing to break the monopoly of NPCI? Sir, uh, sir, RBI, sir, I don't know exactly. Uh, what are you? What is your optional? My option is geography, sir. Geography. You also would have studied the origin of Earth and interior of Earth. Tell me what evidence that we have for the interior of the Earth. Uh, so when we talk about mantle and core and interior core and outer core and inner core, what evidence do we have so that we can predict what kind of fluid is it in solid state or liquid state, or what kind of minerals do we get there? So what evidence do we have for that? There are two types of evidences. One is a direct evidence and one is an indirect evidence. The direct evidence include like volcanic eruptions. Hmm. The molten material comes from inside the Earth's crust, which can be studied and identified. The indirect evidences include, sir, asteroids and meteor showers, as well as, sir, the the uh, the uh, the study of the. Okay, Aditya, tell me were the Himalayas formed? The Himalayas were formed by the cementation of material
was the material sedimentation took place in the Tethys Sea, which got folded and which led to the rise of the Himalayas. And Are you basically, yeah, it's sir, okay, sir, it is a result of the convergence of two plates, the Indo-Australian and the Eurasian plates. uh, what is this regarding this folding concept of and the creation of the mountains? What is this concept of geosynclines? Sir, I can't recollect, sir, right now. Okay, tell me, is geography playing a bigger role in politics nowadays, given the fact that what we've seen in Afghanistan? Comment on this particular issue with respect to Afghanistan. So, geopolitics does play a very important role, sir, in today's politics because the areas which are mineral rich, uh, like like the Middle East, which is rich in oil and natural gas, as well as areas like Ukraine and Russia, which are major suppliers of oil and gas, are generally in interest of the world powers. So they try to to make arrangements so that the incumbents in these countries are on their sides rather than on their opponents' sides. So in case of Afghanistan, it's a very strategic area because it connects the Europe with the rest of Asia, and it's very important in the Belt and Road Initiative of China. It allows You mentioned, connectivity in the Central Asian region. why is India not participating in the Belt and Road Initiative? Sir, there are a few points of contention. One is the Belt and Road Initiative is passing through the Pak occupied Kashmir, which is being contested by India. And then, sir, are also reports of the debt trap diplomacy of China. That wherever it goes, it tries to indebt those countries, and which leads to their financial stability, sir, doesn't uh, remain taxed. Do we have any alternatives to the Belt and Road Initiative at the global level? Sir, the Asia Pacific Economic Cooperation, sir. And The, what is this in India's Mosam project? sir, it is a project by the government of India, the Ministry of Sciences, to gain an insight on the forces which are at play for the generation of monsoon in India, for better tracking of monsoon, For the better tracking of the monsoon. monsoon. So, Okay. You're a BTech student in electronics and electrical engineering. so Can you tell me what is Wi-Fi technology? white, Fi. Like we have the Wi-Fi. Now we have this new technology known as the Wi-Fi technology. sir, I'm not aware of it. Okay, tell me why is silicon used in transistors? What is the reason? Sir, the silicon is in the silicon helps in better conduction of uh, electrons. What It is else? basically it has a layer in which you when you pass electron electric, sir, I can't recollect, sir. Silicon is the second most common element in the periodic table. Can you name the most common element in Earth's crust?
Uh, so, What is Moore's law? sir, I can't recollect. Are you aware of the RFIDs, RFID tags? Yes, sir. How do they work? They work by identification of the radio frequency. And what is the application of RFID in administration? RFID. Sir, I'm not sure about it. How would your knowledge of engineering would help us in administration? Sir, now most of the initiatives of the government have become digital and paperless. So technology is playing a very important part in governance, be it disaster management or planning or transmission of new schemes and messages. And moreover, nowadays the the schemes which are meant for the beneficiaries uh, send money direct to their accounts through their mobile numbers, UPI interfaces, which is done through the mobile and internet technology, sir. So, sir, incorporation of technology I would be able to manage incorporation of technology better, sir. Being a person who's got a background from engineering. And how would you use your knowledge of the banking sector uh, as an officer? Sir, currently I'm working in State Bank as an administrator in small and medium enterprises business. Here we try to provide money to small businesses through schemes like the Mudra Yojana and Stand Up India and Pradhan Mantri Employment Guarantee Program. So, sir, since I have I have to coordinate with the government agencies as well in such in these programs. I feel I'll be better equipped to further enhance these programs into administration. You're a manager at SBI. You will be drawing a handsome salary. So why would you want to join civil services? Sir, when my tech got completed, uh, since then I've been trying to get into the administrative services. I did give early attempts, but I couldn't make it through. So in the interregnum, I joined banking to gain experience in corporate sector and in the banking field. Uh, uh, in 2016, sir, I reached till the main stage in JKS exam, but I couldn't get through. So I've been trying ever since. The banking job has been an interregnum, sir. That's what I feel, and has been very helpful in giving me an insight to prepare for the Now, services. my question is why? Why do you want to join civil services? What are the reasons? You answered that I wanted to do it from the initial stage only, and in between you went for SBI. But why did you decide to go for civil services in the initial stage? So it initially started as a dream of my grandfather. He's not here anymore. He's not alive. But after that, once I started studying for it, I gained insight into how powerful the administration is in helping people and the society, and moreover, sir, I will get an opportunity to serve the people from my home state. So it will be more like coming back to my roots. And sir, moreover, my parents have been ex-government servants. They both retired as government doctors. So that whole exposure has always been there, and I have had an inclination towards getting into the government services, particularly the administration.
आदित्य, लेट्स अज्यूम कि यू आर पार्ट ऑफ द पैनल और आप इंटरव्यू ले रहे हो जेकेएस एस्पिरेंट्स का, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी रूम में आते हैं इंटरव्यू देने के लिए. विल यू सिलेक्ट हिम? Sir, it's an open-ended question because so there are a lot of parameters to be seen before. Because sir, you can't judge a person on the basis of his reputation only. So will you select him? Sir, if I find him suitable for the job, for the if he has all the parameters which are required, I will certainly select him, sir. And do you think he will get selected? The father of nation, do you think he will get selected as an administrative officer? Sir, he definitely has some great qualities which are required in an administrator. Like he was very hardworking, and he was against corruption. He was for a just society. So I think in those areas he would make a good administrator. But sir, if I consider his political leanings, then I think sir that is a different thing because in administration, sir, there is no chance of a deadlock. You have to think about the best possible way to get through a situation. So if that is the thing, then sir, I won't think that that's a desirable quality. So it's going to be a mixed thing, sir, a mixed bag. अच्छा, मुझे आप अपने लाइफ के बारे में बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? सर जिंदगी का सर रिग्रेट ये रहा है कि सर अभी सर इट्स बीन लाइक डेकेड सिंस आई एम आउट ऑफ माय कॉलेज. तो व्हेन आई सर शुड आई आंसर in Hindi or can I answer in Hindi please? Yes. Continue. राइट. सर रिग्रेट तो सर ये की रहा है कि अभी 10 साल से सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो अभी सर वंस मैं जब निकल गया वहां से कॉलेज से, उसके बाद मैंने जब ये सब तैयारी की, तो तब मुझे एक लाइकिंग सर डेवलप हो गई उसके लिए, लॉ के लिए. तो मुझे सर ये लगा कि अगर काश मैंने लॉ कर ली होती पिछले कुछ 5-6 साल में, 2-3 साल में, तो मुझे ज्यादा अच्छा फील होता सर. बस ये. कोई ऐसी एग्जाम्पल दीजिए अपनी लाइफ से जहां पर आपने अपनी फैमिली से बढ़कर किसी और चीज को प्रायोरिटाइज किया. सर आई थिंक ये सर प्रिपरेशन ये है सर आया सर कि मतलब इसमें फैमिली से ऊपर ही रखा है. और सर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सर अभी तक सर आई एम अनमैरिड, तो दैट इज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स कि आई रियली डिडंट वांट टू स्टार्ट अ फैमिली बिफोर आई गेट थ्रू माय गोल्स. Has there been any situation in your life where your senior or your colleague has taken a credit of the job that you had initially done? Yes, sir, there have been instances sir, in particular, and sir, that's a how did you deal with that? Sir, there have been sir some cases in which my superiors have taken credit for things I've done, but sir, in a case like a banking or a corporate industry, you have to wait out your time, sir. That I've taken it in a positive state, sir. That I think that one day my whatever I'm doing over there will get a recognition. So I've been patient about it, sir. And sir, I'm more interested in getting the thing done rather than taking credit for it, sir. So don't you think that if somebody is taking the credit of the work that you have done, instead of being patient about it, you should actually fight for yourself? If you're not able to fight for yourself, how can you fight for the people? Sir,
that is the basic thing I'm behind, sir. Basically, I want things to run smoother rather than me getting red for it. Because sir, as I'm working in the SE sector, if I get behind things like credit, then I actually give credit to the people and the needy will suffer, sir. So I feel that I should be more effective in delivering goods to the customers whom in the eyes of Shri Mahatma Gandhi are the owners of our institutions, and they should be given the best treatment possible. Okay, tell me, suppose you're given a problem that you have never worked on before, and you're looking at the issue for the first time, and you have no experience on how to do it. How would you deal with this issue? Sir, there are many techniques to deal with things which you don't know about. Sir, one of those is to ask your seniors or people who worked in your profile earlier, even and look at precedents if there have been any cases in the past where such problems have come. The other way is to, sir, try to to find solutions through methods like hidden trial and error. So I try to find solutions that way, sir. So tell me that one thing in your life that you're very proud of. Sir, I think my family, sir, my mother. I'm One very thing that proud of you my have mother. one thing that you have done in your life that you're proud of. Sir, I was volunteer at the Commonwealth Games in 2010. So I feel I am really proud of that. I'm very proud that I was a part of that those games because I had to give an interview for that. Okay, Commonwealth Games. So Commonwealth Games were held in Delhi. In which year? 2010, sir. Was it the first time held in India, or have we had any Commonwealth Games before that as well? It was the first time it was held in India. Is there any? Was it the first time in Asia as well? Sir, I don't I can't recall, sir, about that. What are your? Give me three of your weaknesses. The biggest weaknesses that you have. Sir, I'm sir little emotional at times, sir. I feel that. Yeah. You want two So what? more weaknesses? Yes, Two more three of your weaknesses. weaknesses. Yeah. Three of my weaknesses. Sir, secondly, I feel uh, that I don't read that much. When it comes to literature, I think that I should have given more time to study literature and novels and all. But I don't give that much time to it. And so third of my weakness is that, sir, at times I'm, sir, impatient when things are not getting right. When I see that there's something wrong happening, I get a little impatient, sir. What are your hobbies? Sir, I like to listen to music and watch some informative web series, sir, whenever I get the time. Oh, what kind of music do you like to hear? So normally the Bollywood songs for basically for relaxation, sir. Do you think the quality of music nowadays in the Bollywood songs is on a continuous fall? So to an extent, yes, sir. That mostly remixes are doing the rounds and the rap culture has come in. So there has been a decline, sir, certainly, and And that I can say after. what are the reasons for that? Why is there the quality of music getting is there a decline? Sir, I think it's become really commercialized.
since the demand is pretty high, so many pictures are getting produced and made. So they're not focusing on quality anymore. And the new generation likes little fast things. They're not into music per se. Who's your favorite singer? Sir, Arijit Singh is my favorite singer. What do you like about him? Sir, whatever I could gain, whatever I could uh, examine from his persona on the media, he's a very humble guy and he's down to earth and he's self-made. These are a few qualities I like about him. Name a web series that you recently watched. Sir, I just saw saw Khaki Bihar chapter. It was on Netflix. Netflix It's has had based a on the. Netflix is, if you compare Netflix with the YouTube, Netflix is working on the subscription model. So, and they have registered huge losses because of that model, and now they are planning on introducing advertisements as well inside those streaming platforms. So, tell me this rise of Netflix and the decline of Netflix, and how is it impacting the Indian web series market? Sir, Netflix revolutionized Indian viewership during the COVID when the theaters are not opening. At that point of time, people started watching uh, content from around the world. Uh, and so at that point of time, Netflix was really effective in getting in more and more users and customers. But since it's trying to expand into India, it is facing problems like its price model. It's a little too expensive as compared to other platforms like Amazon or Hotstar. So just to keep the prices in check, it had to lower its prices in India. But since then, it started to face with losses. And now to recover these losses, it has thought of getting in advertisements in its model. We see with the introduction of these online platforms, streaming platforms in India. Uh, are you seeing that there's a shift in the ideology of the youth? They are trying to become westernized, more westernized. Sir, there has been a radical shift, uh, and it's not just because of the web series market. We've started becoming a part of the global family from the rise of food joints like McDonald's. The cuisine, it's been shifting that way. The advent of BPOs, post liberalization in India, they have hired a lot of people who speak English. So and the rule of British also to an extent. We still have a lot of colonial overhangs in our country. So I think only the web series has catalyzed westernization of Indian youth. So, is it a good development in India, or should we try to curb it? Sir, I don't think such the ideologies can be covered that easily. But I think we should also stress on our soft power, which is our culture, like things like the International Yoga Day, uh, which is celebrated in the UN, is one such great example, and which has helped a lot of people during COVID to fight stress and anxiety, joblessness. So I think we should also portray our culture and not think of suppressing other cultures. All right, let's conclude the session. So, I have your feedback ready. so, Um, तो कैसा लग रहा है आपको? How was your performance? How was the interview? तो मैं काफी ज्यादा वो फंबल कर रहा था, मतलब मैंने सर एक इन पर्सन की इंटरव्यू दिया था पीछे, बट Mhm. आई वाज नॉट
as nervous as I was today, I guess, sir. मुझे काफी कुछ लग रहा है जहां पर हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए. सबसे पहले तो विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग. आपका इंट्रोडक्शन इज स्पॉट ऑन. आपने जो जो बताना होता है इंट्रोडक्शन में इसी ऑर्डर में वहां पर भी यू कैन रेप्लिकेट द सेम. आपने अपना नाम बताया, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्कूलिंग कहाँ से हुई. बिकॉज आपकी स्कूलिंग दिल्ली से हुई है, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि दिल्ली से क्वेश्चन होगा, दिल्ली के स्कूलिंग या एजुकेशन सेक्टर से. फिर आपका बीटेक, फिर आपने बोला आपका वर्क एक्सपीरियंस इन एसबीआई एंड देन योर इंटरेस्ट. तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इंट्रोडक्शन. बट सिंस यही इंट्रोडक्शन से you can channelize and lead the interview. Now, if you want that they ask you about the schooling education sector in Delhi, so you can elaborate the schooling in Delhi वाला part. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन में थोड़ा उस पर एम्फेसिस देना है अगर आप चाहते हो कि वो आपको वहां पर ले जाए. उसमें फिर आपको वहां पर नई नई स्कीम्स क्या है, कैसे उन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट किया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस की, टीचिंग को कैसे ट्रेन की. रिसेंटली दिल्ली ने अपने टीचर्स को यूनाइटेड स्टेट्स भेजा वहां पर, वहां का कल्चर देखने के लिए, वहां की स्कूलिंग का सिस्टम देखने के लिए. सो इफ यू वांट कि वो वहां से उसको लीड करे तो उस पर स्कूलिंग इन दिल्ली पर एम्फेसिस ज्यादा देना है. और जहां पर भी अगर आपको ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस पर, यानी एसबीआई में वो घुस जाए, आपको एसबीआई से फिर सवाल पूछे, तो वहां पर फिर उनको उसी चीज पर एम्फेसिस देना है. तो आप अपने इंटरव्यू से ही, बिकॉज आपकी इंटरव्यू में 3 चीजें मुझे लगी, प्रोबेबली 4 चीजें, जहां से आप अपने इंट्रोडक्शन को ही इस्तेमाल कर सकते हो टू लीड द इंटरव्यू. पहले आपका आदित्य, आपका नाम, बिकॉज इट्स लिंक्ड विद स्पेस मिशन, वेरी पॉपुलर स्पेस मिशन. सेकेंड इज योर स्कूलिंग इन दिल्ली वाला हिस्सा. थर्ड इज योर बीटेक इन ट्रिपल ई, एंड देन योर एसबीआई एक्सपीरियंस. तो ये 4 चीजों से आप इंटरव्यू को लीड कर सकते हो. If you don't mind, could I write this thing down? If you don't mind, could I write it down? These Yes. points. Yes. Please. Now see, what I would suggest you कि आप दिल्ली का एजुकेशनल सेक्टर अच्छा देख लो और आप अपने इंट्रोडक्शन में स्कूलिंग इन दिल्ली वाले पार्ट को एम्फसाइज करो. व्हाई? बिकॉज आपका एसबीआई का एक्सपीरियंस तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस पे 100% सवाल पूछा जाता है. और बीटेक वाले से भी कोई 1-2 सवाल आ सकते हैं, बट स्कूल वाले हिस्से पर यू कैन लीड देम देयर. So just have a very good understanding of how the schooling system works in Delhi and how has it improved. What was there before Aam Aadmi Party came into came into power. तो ये यहाँ पर you can focus on there. उसके बाद we started with your district. Sorry, we started with the Delhi schooling model. उसके बाद वहीं सर आपका एनसीटी का एक्ट आ गया, उसके की प्रोविजंस क्या है. जो मुझे लगा, जैसे ही मैंने आपको बोला कि क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हो रही है, तो आपने बोला इसके क्या फायदे या नुकसान है. तो आपने बोला सर इसके मेरिट्स भी है और इसके डीमेरिट्स भी है. फिर जब आपने एक्सप्लेन किया तो आपने सिर्फ मेरिट बोला, डीमेरिट तो आपने बोला नहीं. उसके बाद यू वेटेड फॉर मी टू टेल यू, अब डीमेरिट बताइए आप. ठीक है ना. सो डोंट डू दिस. आपको जब भी कोई इश्यू बोला जा रहा है कि क्या सेंट्रलाइजेशन हो रही है या नहीं हो रही, आपको मेरिट भी बोलना है, डीमेरिट भी खुद से बोलना है. जो मुझे लग रहा है कि आप बहुत छोटा जवाब दे देते हो और उसमें फिर इनकम्प्लीटनेस फील होता है कि आपने आधा ही छोड़ दिया इसको. ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. दिस पूरा जवाब देना है जो भी आपने इनिशियली बोल रखा है. देन आपकी डिस्ट्रिक्ट बसोली पेंटिंग आपने बोली, पहाड़ी स्कूल है. जैसे ही आपने वहां पर बोला, वहां से 26 बार वहां से फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट इंट्रोड्यूस किया है. तो बजट पर क्योंकि आपने वो खुद ही बोल दिया, यू कैन एक्सपेक्ट कि वहां से वो कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस बजट पर ही. ठीक है ना. या तो यू डोंट हैव टू इवन मेंशन इट, बट अगर आपने मेंशन कर लिया तो बजट का अच्छा खासा वो देख लो कि इस साल के बजट में क्या हुआ, बजट का प्रोसीजर क्या होता है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन बिल आर्टिकल 114, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117. पहले अप्रोप्रिएशन पास होता है, फिर फाइनेंस पास होता है. तो उसमें 6 स्टेजेस क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स की पर वोटिंग होती है, कट मोशन क्या होते हैं, गिलेटिन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिकॉज यू मेंशन द बजट, तो बजट से यू कैन कैरी फॉरवर्ड द इंटरव्यू. उसके बाद बिकॉज योर नेम इज आदित्य, देयर इज नो चांस कि आप आदित्य L1 का मिशन अच्छे से नहीं पढ़ोगे. मैंने आपको पूछा था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन. तो ऑब्जेक्टिव इज कोरोनोग्राफी. दे हैव टू स्टडी द कोरोना ऑफ द सन, द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन.
उसके लिए they'll send it this mission to the Halos orbit, जो लग्रांजे पॉइंट 1 पे जाएगा, और दो बॉडीज के सिस्टम में 5 लग्रांजे पॉइंट्स होते हैं, तो ये L1 पे जाएगा, ऐसी L2, L3, L4, L5 ऐसे ही 5 पोजीशंस होते हैं। उसमें फिर इंडिया के 2 उसमें कंपोनेंट्स जा रहे हैं, शूट और पापा के नाम से। सो जस्ट जस्ट शूट क्या है, पापा क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उससे क्या फायदा मिलेगा इंडिया को। तो ये आदित्य L1 का मिशन। और रॉकेट कौन सा इस्तेमाल होगा, मार्क 3 और मार्क 2 में फर्क क्या है? मार्क 2 में द क्रायोजेनिक इंजन जो तीसरे स्टेज पर लगता है, दैट इज अ क्रायोजेनिक इंजन 7.5, जिसकी वजह से उसको टोटल कैपेसिटी और स्पेसिफिक इंपल्स उसका कम है। कंपेयर दैट विद जीएसएलवी मार्क 3, इट यूजेस अ क्रायोजेनिक इंजन 20, जिसका स्पेसिफिक इंपल्स और पेलोड कैपेसिटी काफी ज्यादा है। देन वी शिफ्टेड टू योर एसबीआई एक्सपीरियंस। वहां पर मुझे लगा यू हैव टू वर्क अ लॉट, बिकॉज वी एक्सपेक्ट कि आपको अच्छी नॉलेज होगी बैंकिंग सिस्टम की, और बैंकिंग सिस्टम के इश्यूज, कोई ऐसा इशू जिस पर आपने काम किया हो स्पेसिफिकली, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे यू मेंशन्ड अबाउट सेलिंग द लोन्स टू दीज रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट आर द स्पेसिफिक इश्यूज विद द रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। सबसे बड़ा इशू है, आपने बोला कि गाइडलाइन नहीं है, वो ठीक है, वो सबका इशू होता है, और सबसे बड़ा इशू है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है। एनपीए इतने बड़े साइज का है, बट दे डोंट हैव द कैपिटल टू परचेज द एंटायर एनपीए फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फिर जाके दैट इज व्हाई वी हैव अ गवर्नमेंट फंडेड बैड बैंक, ताकि गवर्नमेंट उनको उसको फंड कर सके, ताकि वो लोन्स खरीद सके। आईबीसी के बारे में, आईबीसी का क्या रोल है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी, दैट इज एंटायरली रॉन्ग आंसर दैट यू गिव कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी का जो डिफरेंस है। Insolvency is when you're not able to pay back the loan. That means you become insolvent, whether you're an individual or a company. Bankruptcy is a legal status जो आपको मिलता है, ठीक है ना, बैंकरप्ट कोई भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पर, अगर आपको पता है, इनफैक्ट दिस हैज हैपेंड मुझे लगता है 4 to 5 times, wherein if you don't know it, you can simply say सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट आपने 2-3 जगह गलत जवाब दे दिया पूरा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पूछा कि मौसम प्रोजेक्ट क्या है, आपने बोला उससे मानसून देखना है। इट हैज नथिंग टू डू विद मानसून। मौसम प्रोजेक्ट इंडियन ओशन रीजन में हम वहां पर कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। सो मौसम इज एन ऑल्टरनेटिव दैट इंडिया इज ट्राइंग टू मेक एज एन ऑल्टरनेटिव टू बीआरआई, ठीक है ना। सो गलत जवाब नहीं देना, जस्ट कीप दैट इन माइंड। वी इट डज नॉट मैटर अगर आपको सवालों का जवाब नहीं आता, because we have already checked your knowledge in the prelims and the mains. What we want is कि क्या ये बंदा गलत जवाब तो नहीं देगा। अगर आप 10 सवालों को भी बोलोगे सर मुझे नहीं पता, इट इज फाइन, टोटली फाइन, जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। मुझे नहीं आ रहा 10 सवालों का जवाब, अगर मैं आपको भी 50 सवाल पूछूंगा आपको भी नहीं आएगा 10 का जवाब। प्रॉब्लम सवाल जवाब ना पता होने का नहीं है, प्रॉब्लम है ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ये गलत तो नहीं बोल रहा, वो प्रॉब्लम है। तो कीप दैट इन माइंड, गलत जवाब नहीं देने। जैसे आपने बोला कि मैंने आपको कहा कि एसएलआर, क्या सीआरआर पे कभी इंटरेस्ट मिला है हमें, फिर से आपने वहां गलत जवाब दिया। आरबीआई ने 1997 में इंटरेस्ट दिया, 1999 में इंटरेस्ट दिया सीआरआर के ऊपर, ठीक है ना। तो वी हैव आल्सो रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन सीआरआर फॉर सम टाइम। तो डोंट से रॉन्ग आंसर्स। उसके बाद वी शिफ्टेड टू हिमालयाज एंड जियो सिंक्लाइन। जैसे जियो सिंक्लाइन में आज पूछा, आपने कहा मुझे नहीं पता, तो फाइन, वो भूल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जियो सिंक्लाइन का क्वेश्चन पूछा, आपने कहा सर मुझे नहीं पता, तो जैसे ही आपने बोला मुझे नहीं पता, तो पैनलिस्ट के दिमाग में से वो भूल जाता है उसको क्वेश्चन। लेकिन अगर आप जियो सिंक्लाइन पे गलत जवाब दे देते, वो याद रहेगा इसने गलत बोला था, ठीक है ना। जस्ट ये इस चीज को याद रखना है। उसके बाद बी वेरी, मुझे क्या लगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैव आस्क्ड यू इज बिकॉज you led me there. I told you what is the role of geography in politics with respect to Afghanistan. तो वहां पर you mentioned BRI. तो जब आपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूछा, फिर मैंने उसको आपको परस्यू किया। वहां पर मैंने कहा कि क्या कोई ऑल्टरनेटिव है, क्या इंडिया कोई कर रहा है। फिर वहां से मौसम प्रोजेक्ट निकला, मौसम पर आप फंस गए, आपने गलत जवाब दे दिया। तो इन चीजों को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है कि क्या आप इंटरव्यूअर को उस जगह लेना चाहते हो जहां पर आप कंफर्टेबल हो या नहीं। Be very judicious with the words that you use.
उसके बाद हाउ वुड बैंकिंग हेल्प इन केएस, उसमें आपने अच्छा जवाब दिया, फंडिंग का। व्हाई सिविल सर्विसेज? नाउ सी, आपने दो तीन चीजें बोली उसमें। पहले बोला आपने व्हाई सिविल सर्विस, मैंने पूछा व्हाई सिविल सर्विसेज, आपने कहा आई वांटेड टू गो फॉर इट बिकॉज मेरा पहले से ये ड्रीम था। ठीक है, यू वांटेड टू डू इट, that is what you want, what you desire. It would not be the reason why we would provide you the job. हमें ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि हम आपको जॉब क्यों दें, नॉट बिकॉज हम आपको इसलिए जॉब नहीं देंगे बिकॉज यू वांट इट। ऐसे तो फिर लाखों बच्चे दे वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, उनको उनकी वांट के बेसिस पे वी डोंट गिव देम द जॉब। सो दिस इज नॉट व्हाट इज टू बी मेंशन्ड हियर। आपने बोला इट वाज अ ड्रीम ऑफ माय ग्रैंडफादर। नाउ यहां पर क्या दिखेगा, इफ दैट वाज अ ड्रीम ऑफ योर ग्रैंडफादर, लेट्स सपोज योर ग्रैंडफादर हैड अ ड्रीम टू मेक यू अ क्रिकेटर, तो फिर तो आप क्रिकेटर होते। या इफ आपके ग्रैंडफादर का कुछ और ड्रीम होता, फिर आप कुछ और हो जाते। इसका मतलब इस बंदे का कोई सॉलिड रीजन नहीं है सिविल सर्विसेज में आने का। ड्रीम की वजह से चलो सिविल सर्विस है तो चलो ठीक है सिविल सर्विस। फिर आपने बोला इसमें पेरेंट्स आपके सिविल सर्वेंट्स है, तो आपको वो आप वो और आप पता है आपको सिविल सर्विसेज का बिकॉज आपके पेरेंट्स भी सिविल सर्विसेज है। डू नॉट से दीज वर्ड्स। हाँ, आप ये बता सकते थे कि मैं मेरे फादर से इंस्पायर्ड हूं बिकॉज उन्होंने जो काम किया है डिस्ट्रिक्ट की लेवल पर, उन्होंने जो काम किया अपने लोगों के लिए, उन्होंने कैसे उसको उठाया, किस किस इश्यू पर उन्होंने काम किया, मैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर मुझे लगा कि मैं भी ऐसा ही कोई काम करना चाहता हूँ। जस्ट डोंट मेंशन कि बिकॉज योर पेरेंट्स आर सिविल सर्वेंट एंड यू वांट टू डू द सेम थिंग। तो ना ही आप ये बोलेंगे आई वांट टू बिकम, ना ही आप बोलेंगे मेरा ड्रीम, मेरे किसी का ड्रीम था, ना ही आप बोलेंगे मेरे पेरेंट्स की वजह से। आपको क्या बोलना है, और ना ही आपको इस्तेमाल करना है दिस वर्ड लाइक पावरफुल। इसमें एक पावरफुल प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर आप काम कर सकते हैं, तो ऐसा लगेगा मे बी ही इज थर्स्टी फॉर पावर। सो इट इज अ वेरी वेरी इजी आंसर। दैट इज, पहले तो being financially stable is not a concern for you precisely because you already have a good job. So you don't have to mention financial stability there. What you can mention instead is inspiration that you took from your father. वो पहली चीज बोल दो आप। वाई सिविल सर्विसेज? सर बिकॉज मेरे फादर भी सिविल सर्वेंट है और मैंने देखा कि उन्होंने क्या, आई एम इंस्पायर्ड, ऐसे बोला, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माय फादर एंड आई हैव सीन व्हाट वैल्यू ही हैज क्रिएटेड फॉर हिज पीपल। दैट इज फर्स्ट थिंग, इंस्पिरेशन। सेकेंड आपको मेंशन करना है बिकॉज सर आई एज अ पर्सन ओवर दीज ईयर्स, मेरा सर बचपन से क्यूरियस नेचर है, मैं अलग अलग चीजें पढ़ना चाहता हूँ, आई हैव क्यूरियोसिटी इनसाइड मी। तो आई जस्ट डोंट वांट टू बी इन अ जॉब जहां पर कुछ साल के बाद दिस जॉब विल बिकम मोनोटोनस फॉर मी, फिर मुझे अपने ही जॉब से एलियनेशन हो जाएगा। तो सर मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें डाइवर्स वर्क कल्चर हो, मैं अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बैठकर अपने क्यूरियस नेचर को सैशिएट कर सकूं। दैट इज सेकंड। नंबर टू, दैट इज डाइवर्सिटी। नंबर थ्री लेवल पर आप ये बोल सकते हैं कि सर बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गिवन अ चांस आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। It is that platform where you can impact the lives of the people, and since you have a very good decision making capacity, so you think that you according to you think that you will be able to provide value for the society as well. ये सोशल सर्विस वाला जो चीज है इसको बिल्कुल नीचे मेंशन करना है। डोंट स्टार्ट विद द सोशल सर्विस बिकॉज ऐसा लगता है ये क्लीशे सा जवाब है, सब लोग यही बोलते हैं सोशल सर्विस सोशल सर्विस। ठीक है, उसको थोड़ा नीचे लेकर आना है। तो आप बोलेंगे इंस्पिरेशन टॉप पर, डाइवर्सिटी नंबर टू पर, फिर जाके सर्विस कंट्रीब्यूशन। यू आर अ बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिलिकॉन के बारे में हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट। आपने सिलिकॉन में बस एक चीज बोलकर आप रुक गए, यू शुड एलाबोरेट ऑन दैट अ बिट। इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट कॉमन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल एज वेल, तो वहां से मे बी दे कैन लिंक इट विद दैट। नाउ लेट्स गो टू द सिचुएशनल क्वेश्चंस। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे थे आपके सब्जेक्ट या डैफ रिलेटेड। तो सिचुएशनल क्वेश्चंस में मैंने हिंदी में आपको सवाल पूछा, आई चेंज्ड माय लैंग्वेज बिकॉज यही वो वहां पर भी कर रहे हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश में है तो होना तो ये चाहिए आपका पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में चले,
बट देयर इन एज जैसे मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल रही है, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश की जगह वो कोई पैनलिस्ट हिंदी में सवाल पूछ लेता है, बिल्कुल अनऑफिशियल तरीके से, कुछ इनफॉर्मल तरीके से। तो इसीलिए मैं देखना चाह रहा था, अगर मैं हिंदी में शिफ्ट करूंगा, व्हाट वुड यू डू? जैसे मैंने हिंदी में शिफ्ट किया, आपने हिंदी बोला, फिर आप वापस इंग्लिश पे गए, फिर आपने बोला सर कैन आई आंसर इन हिंदी? ठीक है ना? तो यू हैव टू स्टार्ट विद दैट ओनली। जब वो हिंदी में सवाल पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं सर कैन आई आंसर इन हिंदी, फिर जब वो अलाउ करेंगे देन कंटिन्यू इन हिंदी ओनली। उसके बाद आई इंटरप्टेड यू मेनी टाइम्स। जब आप जवाब दे रहे थे, मैं उधर ही इंटरप्ट कर रहा था आपको, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा था, जस्ट बिकॉज मैं देखना चाह रहा था आप इंटरप्शन को कैसा लोगे। तो इंटरप्शन में बीच बीच में आपने वापस इंटरप्ट किया, सो डोंट डू दैट। जैसे वो इंटरप्शन कर रहा है, जस्ट लेट देम इंटरप्ट। ठीक है, उनको बोलने दो। उसके बाद इट शोज द फैसेट ऑफ द पर्सनालिटी दैट यू आर अ गुड लिसनर एज वेल एंड यू आर पेशेंट। उसके बाद आई आस्क्ड यू अबाउट, you even mentioned about कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ को थोड़ा अच्छा रिसर्च करो। कॉमनवेल्थ इंडिया में एक ही बार हुआ है 2010 में, और इट वाज द सेकंड टाइम हैपनिंग इन एशिया। एशिया में सेकंड, दूसरी बार हुआ था उस वक्त 2010 में। उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी शायद, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, समथिंग रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड तो फंडिंग। सुरेश कलमाड़ी सर, और वो फंडिंग, वो the funding for the stadiums, there was some Yes, loopholes in funding. The एग्जैक्टली CAG had हाँ, फंडिंग वाला इशू, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक था उसमें, जस्ट वो कर लेना। देन आई आस्क यू अबाउट व्हाट आर योर 3 बिगेस्ट वीकनेसेस, जिसमें से एक वीकनेस आपने ठीक बोली, जहां पर आपने बोला कि आप लिटरेचर पे ज्यादा फोकस आप करना चाह रहे थे पर नहीं हो पा रहा, तो वो वीकनेस है, वो दैट इज फाइन। वीकनेस ऐसी हो जिसकी वजह से KAS बनने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला सर आई एम टू इमोशनल एट टाइम्स। वेल, यू शुड नॉट बी टू इमोशनल, यू शुड हैव अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। ये टू इमोशनल वाली वीकनेस डू नॉट मेंशन इट देयर। ठीक है, डोंट मेंशन इम्पेशंस। ये थोड़ा, these are the negative aspects of a personality. वीकनेस ऐसी कोई भी नहीं होनी चाहिए दैट वुड बी अ क्वेश्चन ऑन द कैरेक्टर दैट यू हैव। सपोज आपने बोला मैं सर लिटरेचर नहीं पढ़ पा रहा हूं, दैट इज फाइन, बिकॉज लिटरेचर नहीं पढ़ रहे तो केस ऑफिसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। व्हाट यू कैन इंस्टेड मेंशन इज आई एम नॉट टू आर्टिस्टिक इन माई लाइफ। मैं अच्छा गा नहीं पाता, तो हाउएवर आई एम वर्किंग ऑन इट। या ऐसा आप बता सकते हैं कि सर मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं, आई टेक सम टाइम टू ओपन अप विद पीपल, अपनी फीलिंग्स अच्छी ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता मैं लोगों के सामने। या आप बता सकते हैं कि सर आई एम आई लव फूड, और जब जब मैं अच्छा खाना देखता हूं तो मेरा मैं डाइट कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये कुछ वीकनेसेस है जो सटल है, जो फनी है, और इसकी वजह से केएस ऑफिसर बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और जब भी आपको सवाल पूछा जा रहा है, जैसे उसमें आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, व्हेन आई आस्क्ड यू अबाउट व्हाट यू लाइक्ड अबाउट अरिजीत सिंह, उसमें द आइडिया इज आपको किस बात पे नजर पड़ रही है। अगर आप ये बोल देते कि सर क्योंकि वो बहुत अच्छा सिंगर है, उसके गाने काफी हिट हो रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट द पैनलिस्ट वुड लाइक टू हियर। व्हाट दे वुड लाइक टू हियर इज द आंसर दैट यू गेव इज दैट सर वो बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मेड है। वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि आप बोले। तो वो आपका स्पॉट ऑन आंसर था उसमें। ये कुछ चीजें हैं। फिर वेब सीरीज के बारे में वेस्टर्नाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मुझे लगा कि आंसर्स आप कट शॉर्ट कर रहे हो, थोड़ा खुल के मुझे लगा नहीं कि आप इश्यूज को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना आपको। देखो, क्वेश्चंस नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं, आपने मेंस लिख लिया है, यू ऑलरेडी हैव गुड नॉलेज, आपने इससे पहले भी मेंस लिखा, हमें पता है आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, हमें पता है कि आपको नॉलेज है। पर इन चीजों का ख्याल रखना, डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स, डोंट से एनीथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट। आपने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट मेंशन भी नहीं करना जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं, बिकॉज अगर उसको परस्यू करेंगे और आपको नहीं पता होगा, दैट वुड बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट इन द इंटरव्यू।
तो don't give wrong answers, don't mention any of the concepts that you are not exactly aware of, and जो भी आंसर बोलोगे बैलेंस तरीके से बोलना है, खुल के बोलना है, मेरिट भी बोलना है, डीमेरिट भी बोलना है. उसके बाद जो सिचुएशनल क्वेश्चंस थे वहां पर कीप इन माइंड दीज थ्री थिंग्स, जहां पर दे विल पुट यू इन अ सिचुएशन, बिकॉज देयर इज अ पैनलिस्ट विद अ साइकोलॉजिस्ट, ही वुड पुट यू इन अ सिचुएशन जहां पर वो बोलेगा कि आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो जब भी सिचुएशनल क्वेश्चंस होंगे, कीप दीज थ्री थिंग्स इन माइंड. You have to showcase three things. Number one would be logical exposition. You'll showcase your logic. Number two would be you'll showcase moral integrity. Morality का concept भी दिखना चाहिए आपके आंसर में. And then the balance of judgment. Balance of judgment. Now see, if you give an answer which is too logical and which is only on the logical end, तो ऐसा दिखेगा he is a robotic person, कोई emotional empathy नहीं है उसमें. लेकिन अगर आप दूसरे एक्सट्रीम में सिर्फ इमोशनल जवाब देंगे, सिर्फ मोरालिटी का बेसिस पर जवाब देंगे, तो हमें लगेगा ही इज नॉट प्रैक्टिकल इनफ. तो दोनों को बैलेंस आउट करना है, उसमें लॉजिक भी दिखे, मोरालिटी भी दिखे और बैलेंस भी दिखे. तो सिचुएशनल क्वेश्चंस पे इट इज गुड दैट यू हैव टू टेक, यू कैन आस्क देम सर कैन आई टेक अ मोमेंट. तो आप मोमेंट ले, थोड़ा वक्त ले, सोचे उस बारे में कि आप लॉजिक, मोरालिटी और बैलेंस कैसे बैठाओगे, फिर जाके कम अप विद एन आंसर. And you are not maintaining eye contact. You have to maintain eye contact with the questioner. और अगर आपको लग रहा है कि you're not able to think, what you can instead do, अगर आपको क्वेश्चनर सवाल पूछ रहा है तो you have to look at him, don't look at anywhere else. अगर वो सवाल पूछ रहा है, फिर जब आप जवाब दे रहे हो, आप उसकी तरफ भी देख सकते हो, बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी देख सकते हो जवाब के टाइम पर. जब वो सवाल पूछ रहा है, जस्ट मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद हिम ऑन. Any questions? Please ask. I just want to ask that is my speed okay? Speed of speech? Speed ठीक है, आपकी इंग्लिश भी ठीक है. It is like decent, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. गांधी साहब वाले क्वेश्चन में, महात्मा गांधी वाले क्वेश्चन में आपने खामखा पर यू मेंशन्ड पॉलिटिकल लीनिंग्स, बिकॉज आपने वो डेडलॉक का चांस बोला. डोंट मेंशन, बिकॉज ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, देयर काइंड ऑफ टू चेक योर सेंस ऑफ ह्यूमर एज वेल. तो अगर आपको मैंने कहा कि विल यू सिलेक्ट हिम, तो आपने बोला सर आई वुड डिसाइड माय सिलेक्शन, आई वुड डिसाइड हिज सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ही वुड गिव इन द इंटरव्यू. तो उस बेसिस पर आई वुड सिलेक्ट हिम और रिजेक्ट हिम. फिर व्हेन आई आस्क्ड यू डू यू थिंक ही विल बी सिलेक्टेड, so therein you can have a funny answer like, yes sir, I think he will be selected because he has those qualities, like he would get very good marks in mains because we've heard that he was a very good writer, and he would also get very good marks in personality test. Why? Because he also has some officer like qualities when he was working in South Africa. ठीक है ना. तो उस बेसिस पे you can give a very subtle answer. तो उसमें ज्यादा घुसना नहीं है पॉलिटिकल लीनिंग में. फिर वो पॉलिटिकल लीनिंग में चले जाएंगे, फिर वहां से अंबेडकर और गांधी का डिबेट शुरू हो जाएगा, फिर वहां पर मे बी आप फंस जाए. And sir, last thing I would like to ask from you, sir, am I speaking a lot while I'm giving answers? That is my answer getting interrupted a lot? That's what I want to ask. Interrupt? I did not understand. What kind of interruption? I'm like from mine. Am I stopping a lot in between, like saying, like using words like that is my flow okay, or am I stopping a lot in between, sir? No, your flow is fine. In fact, I would recommend you, when you hear the question, you take some time, like 2-3 सेकंड pause लेकर just start an answer, have a good answer. उसके बाद once you have actually why were you stopping in between is because you did not have a very good answer. जहां पर आपके अच्छा आंसर्स थे आपके पास, वहां पर आपका फ्लो बहुत अच्छा था. वही जानना चाह रहा हूं. हाँ, जहां पर आपके आंसर्स अच्छे थे, आपके फ्लो अच्छे थे. जैसे मैंने आपको पूछा कि आपने ऐसी कोई चीज है जहां पर आपने फैमिली को के ऊपर किसी को प्रायोरिटाइज किया,
या आपने कोई ऐसा काम कैसे करोगे जहां पर आपको उस जॉब के बारे में कुछ नहीं पता। आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं था बीच में। हाँ, पर जहां पर आपको पता ही नहीं था, जैसे आई टोल्ड यू अबाउट सनसेट बजटिंग, तो उसमें क्या है, या जीरो बेस बजटिंग, या फिर मैंने ऐसे बोला कि कोई स्कीम बोलो जो जहां पर खत्म हो जाती है, तो यू मेंशन मार्च रश। मार्च रश इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, मैं फिर से बोलूंगा, गलत जवाब नहीं देना है। अगर आपको नहीं पता जस्ट फिर बोल के चल लो आई डोंट नो। इंटरप्शन नहीं आ रहा आपका, फाइन है, फ्लो ठीक है। जहां पर आपको आंसर्स पता है वहां फ्लो ठीक है। एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड नॉट, इस चक्कर में मत फंसो आप कि अगर मैं हर एक सवाल पे ये बोल दूंगा कि आई डोंट नो, कि वो गलत समझेंगे कुछ। अगर आप आई डोंट नो बोल दोगे वो भूल जाएंगे उस क्वेश्चन को, पर अगर आप गलत जवाब दे दोगे उनको याद रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। We wish that you get selected, and we wish that we see you in the finalist. Thank you, sir. Thank you. Take care.